Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 29th and 30th of December. The session will be quite interesting students, and we will be discussing all these current affairs in detail. Here we will be talking about various projects that has been recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in the state of Madhya Pradesh. Then we will be talking about Punjab, as they became the fifth state to provide 100% piped water supply to rural household. Then we will be talking about the first border solar village in India. Next we will be talking about zero waste airport, that is India's first zero waste airport. Correct. So these are the some important current affairs we will be discussing in detail. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Then weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are also uploaded on regular basis. That will give you a better insight about your learning for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then students, let's start with national affairs. First is Prime Minister Narendra Modi visited and inaugurated various projects in the state of Madhya Pradesh, right? So PM Narendra Modi was in Madhya Pradesh on 25th of December, and this was on the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and during this visit he has laid multiple foundation stones for multiple projects, right? For example, the first project is he laid the foundation stone of Ken Betwa River Link project in Khajuraho, that is in Madhya Pradesh, right? For this 44,605 crore rupees has been allocated. Next is PM Modi inaugurated Omkareshwar floating solar project established at Omkareshwar in Khandwa district of Madhya Pradesh. Then third, PM Modi laid the foundation stone of 1153 Atal Gram Susashan buildings. And fourth, PM Modi released 100 rupees commemorative coin and a stamp to honor and celebrate 100th birth anniversary of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. If we talk about Madhya Pradesh, who is the current Chief Minister? Mohan Yadav. Who is the governor here? Mangubhai Patel. What is the capital? Capital is Bhopal. Right. Then in Madhya Pradesh, Kanha National Park, Pench National Park, Panna National Park, Bandhavgarh National Park, they are all located. Moving on, Punjab. Punjab became the fifth state to provide 100% piped water supply to the rural areas. I repeat, which is that state that became the fifth state of India in order to provide piped water supply to the rural household? It is the Punjab state, right? And this comes under Jal Jeevan Mission, that is Har Ghar Jal scheme. I repeat, this 100% piped water supply to the rural households were provided under which scheme? The scheme is Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal. As of December, all states and union territories, they have more than 50% coverage of tap water connection in rural households. Also, in order to tackle the quality of water and scarcity issues, 15 major canal water projects are being implemented across 1706 villages with a total investment of 2174 crore rupees that will benefit more than 25 lakh people and 4 lakh families. Apart from this, waste management facilities has also been set up in 3,366 villages for solid waste management and in 9,909 villages for grey water management.
One more thing, remember students, apart from this, what is the or which party's government is there in Punjab? It is Aam Aadmi Party. And who is the Chief Minister of Punjab? Bhagwant Singh Mann. Next, and if we talk about this Har Ghar Jal scheme, this was launched by the Ministry of Jal Shakti and it was launched in the year 2019. Moving on, Gujarat's Masali became the first border solar village in India. Very important, students, as our country, we are heavily betting on solar energy, and we know it is the Rajasthan state that is the best performer in terms of solar energy. Correct? So, and Gujarat is on second position. So, there is a village in Gujarat, right? That is the border village. That is Masali village. Correct? In Gujarat, it became the first border solar village that is contributing to India's solar energy problems. And this Masali is one of the 17 villages under the Border Area Development Program, centrally sponsored scheme that has come up with the solar energy here. Apart from this, one more thing, remember, Pradhan Mantri Surya Muft Bijli Yojana. This scheme was launched in Feb 2024 in order to provide free electricity to 1 crore households in India that install solar rooftop unit, offering 300 units of free electricity per month. Moving on, next is Indore's Devi Ahilyabai Holkar Airport officially became the India's first zero waste airport. So, which is the official first India's first zero waste airport? It is Devi Ahilyabai Holkar Airport, that is in Indore, Madhya Pradesh. This airport is spread over 3,000 square feet, right? And here it became India's first zero waste airport with inauguration of 3,000 square feet material recovery facility at the airport. Next is international affairs. China has recently approved the construction of the world's largest hydropower dam. That will be on which river? This question will become important, and it was in social media also, right? So it is Brahmaputra river on which the world's largest hydropower dam will be built. It will be built by which country? It will be built by China, right? And this is Yarlong Zangbo river, that is the 5th largest river of China, right? And in India, the Brahmaputra river flows into India and Bangladesh. Next is, we are talking about IRDAI, right? They have recently released a report that stated that the claim ratio of non-life insurance declines to 82.5% in FY24 and the insurance penetration is at 3.7%. Correct? That was 4% last year. Let me show you. According to the annual report of IRDAI, the claim ratio, that is the net incurred claims to the net earned premium of non-life insurance industry, declined to 82.52% for FY24 compared to 82.95% in FY23. The report showed that the non-life insurance sector underwrote a total direct premium of 2.9 lakh crore rupees in India, registering a growth of 12.76% from preceding year. This growth is mainly attributed by increased health and motor insurance premiums for individuals. Also, India's insurance penetration was 3.7% in FY25. That was 4% in FY23. If we talk about IRDAI, who is the chairperson? Devashish Panda, headquartered in Hyderabad, Telangana. Moving on. Next is RBI. They have constituted a 8-member committee to develop framework on ethical use of artificial intelligence in financial sector. I repeat, RBI, they have announced that they have constituted an 8-member committee, right? And this is to develop a framework for free AI. Now, what is this free AI? This is your framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence, and this free AI will be developed for the financial sector. Correct? Here, this 8-member committee, it will be chaired by whom? It will be chaired by Pushpak Bhattacharya, a professor from the Department of Computer Science and Engineering from IIT Bombay. This committee is expected to submit their report within 6 months, and here RBI's FinTech department will provide sectorial support to the newly constituted committee. Moving on. Next is IFSCA. They have released the revised framework for ITFS platform in GIFT City. Where is this GIFT City? This is in Gandhinagar, Gujarat.
So recently, and one more thing, what is this IFSCA? This is your International Financial Service Centers Authority. So this IFSCA, they have released a revised framework for setting up and operating of international trade financing service platform in Jeff City, right? And this is in Gandhinagar, Gujarat. Now this move will allow the ITFS platform to operate in IFSC, which will help in bringing the financing gap for the exporters and importers in India as well as globally. Here you will be seeing on tap registration framework, right? Eligible partners will be there. This list, eligible participants list will be there. That includes your financiers, exporters, importers, insurance companies, right? And this list will now include the payment services providers also. Apart from this, if we talk about this IFSCA, who is the chairperson here? K. Rajaraman, headquartered in Gift City, Gandhinagar, Gujarat, established in 2020. Moving on, next is Central Bank of Sri Lanka. They have imposed a monetary penalty of 5.85 lakh rupees on Indian Bank for non-compliance, right? That is FIU of Central Bank of Sri Lanka, that is the Financial Intelligence Unit of Central Bank of Sri Lanka. They have imposed a monetary penalty of 5.85 lakh rupees on Chennai, Tamil Nadu based public sector undertaking Indian Bank Limited. So amount you have to remember, who imposed the penalty and whom this penalty was imposed. Next is ICICI Bank and Times Internet. They have launched Times Black ICICI Bank credit card. I repeat, Mumbai, Maharashtra based ICICI Bank Limited and Times Internet, the digital arm of the Times of India Group, they have launched Times Black ICICI Bank credit card. This is a super premium co-branded metal card offering high net worth individuals exclusive travel benefits, luxury lifestyle services, curated privileges for exceptional experiences and so on. And this is powered by Visa. Next is your Punjab National Bank and FCAOI, that is your Federation of Cold Storage Associations of India. So Punjab National Bank and this Federation of Cold Storage Association of India, they have recently signed a memorandum of understanding that will enhance the agriculture infrastructure and cold chain development across India. These warehouses, right, how they are beneficial, right? This helps them or helps the farmer in order to store their produce, correct, and also to sell them at a price that can give them a better return, right? So basically for storage, these cold chain storage units are established. Moving on, next is IFC, that is the International Financial Corporation, right? The headquarter of which is in Washington DC, and this IFC is a member of World Bank. They have recently invested 630 crore rupees in NDR's INVIT SLPs. What is NDR? NDR is your correct. This NDR is an INVIT. An INVIT is your infrastructure investment trust, correct? So IFC, they have invested this 630 crore rupees in the NDR investment infrastructure investment trust, right? That a headquarter of this NDR infrastructure investment trust is in Mumbai, Maharashtra, and this marks the first time a warehousing INVIT in India has issued an SLB. SLB is your sustainability linked bond, right? This sustainability linked bond SLB is worth how much amount? $75 million or 630 crore rupees. Next is TPREL, that is Tata Power Renewable Energy Limited, headquarter of which is in Mumbai, Maharashtra. They have collaborated with Canara Bank Limited, that is a public sector bank headquartered in Bengaluru, Karnataka, and this is to promote the adoption of rooftop solar systems under the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Here you will be seeing for solar power systems up to 3 kilowatt capacity, loans up to 2 lakh rupees will be offered at a 10% margin and 7% interest rate, and the repayment period here will be 10 years. For solar systems above 3 kilowatt to 10 kilowatt, you will be seeing loan up to 6 lakhs rupees will be provided with 10% annual interest rate and no collateral, and the repayment here will be of 10 years. Next is economy and business, right? Take a note that recently NSO, that is your National Statistical Office, they have released a data about the unemployment rate, right? It is the annual survey of the unincorporated sector enterprise, that is ASUSE, for 23-24 it has been released. As per the report, the fresh new employment creation in the unincorporated non-agriculture sector has slowed in
October 2023 to September 2024 period, right? And additional job creation has declined to 10.97 million compared to 11.74 in October 2022 to October 2023. Also, if we look at the data, it stated that the number of new establishments in unincorporated sector has increased from 5.34 million during the FY23 to 8.35 million in FY24. Moving on, next is appointments and resignations. Kisht partners with Sachin Tendulkar to enhance the digital financial growth. So this Kisht, this is an India's leading digital lending platform that is operated by On EMI Technology Solutions Private Limited, and they have announced a long-term collaboration with cricket legend Sachin Tendulkar as a strategic investor and brand ambassador. This partnership aims to accelerate Kisht's growth and strengthen its offering in speedy and hassle-free credit financing services. Next is Salman Khan and Tiger Shroff. They have been named as the brand ambassador for Kho World Cup 2025. I repeat, Kho World Cup, this is scheduled to be held in our India, right? And this is the inaugural edition. That means this is the first edition of the Kho World Cup, scheduled to be held in New Delhi at Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi and the Noida Indoor Stadium, right? It will be held from 13th to 19th of January 2025. Moving on, next is science and technology. SIA India, they have signed a memorandum of understanding with Ghana's GSSTI to boost space sector. We know that in India, the FDI also in India in space sector has increased to 100%. Government has allowed 100% FDI in the space sector. Coming back, SIA, that is your Satcom Industry Association, right? They have recently signed a memorandum of understanding with Ghana's GSSTI, that is your Ghana Space Science and Technology Institute. This will enhance the satellite communication and the broader space industry. This collaboration aims to leverage India's expertise in space technology, and this will enable Ghana to advance their space capabilities. Here, focus will be on capacity building, innovation, co-development, right, and multiple other programs where they will be working together. Next we are talking about Amantya Technologies. They have been awarded the funding under the TTDF scheme for India 5G stack. 5G, we know that it is a technology where fifth generation of internet will be provided, right? Here you will be seeing Bengaluru, Karnataka based Amantya Technologies. They were awarded funding, right, under the Telecom Technology Development Fund scheme by the Department of Telecommunication. Here it is for the project title. Here you can see the project. For this project, the funding has been allocated. Next is related to sports. India to host the ISSF Junior World Cup 2025. So Kho World Cup will also be hosted by India. That is the inaugural edition. And now India will also host the International Shooting Sport Federation Junior World Cup for 2025. This ISSF Junior World Cup 25 will feature competitions in the rifle, pistol and shotgun categories. And this upcoming edition is the 11th edition of the Junior Shooting World Cup. Next is renowned Malayalam writer and Padma Bhushan awardee M.T. Vasudevan Nair has recently passed away. As you can see him in the picture here, he passed away at the age of 91 in Kozhikode, Kerala. He was born in Kerala. He was awarded with Padma Bhushan, that is the India's third highest civilian award, in 2005. Next is books and authors. HarperCollins India to release the Deepa Malik's Bring It On, The Incredible Story of My Life. This is the book authored by Deepa Malik, will be recently released, right? And it is India's, Deepa Malik is the India's first female Paralympic medalist. Next is important days. Good Governance Day observed on 25th of December. And this day is observed why on 25th of December? Because this marks the birth anniversary of the 10th Prime Minister of India, that is late Atal Bihari Vajpayee ji, right? In order to create awareness about accountability and administration of the government among the people, this day is observed. This year in 2024, it was the 11th edition of the Good Governance Day that was observed, and it was the 100th birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee ji that we saw in the starting of the video. Then there is a theme also, that is India's path to a Viksit Bharat, empowering citizens through good governance and digitalization. This is the scheme here. Theme here, right? Next is Veer Bal Divas observed on 26th of December. This day is observed basically to mark the martyrdom of the Sahibzadas Shri Guru Gobind Singh's fourth son of the 10th Guru Sikh Guru
Gobind Singh Ji, who sacrificed their life in 17th century, and this year it was the third observance of the Veer Bal Divas. Correct? It was started in 2022. Next is International Day of Epidemic Preparedness, observed on 27th of December. This day is observed to create awareness about the preventing and preparing for the epidemics. It highlights the need for the global cooperation and working together to protect the communities from health crisis. Right? This year it was the fifth observance of the International Day of Epidemic Preparedness, and for the first time it was observed in 2020. This day is observed by United Nations. Next is state news. Karnataka government has declared 26th of December as Computer Operators Day. Right here, which government or which state? It is Karnataka. They have issued to celebrate Computer Operators Day every year on 26th of December. This marks the birth anniversary of English mathematician and inventor of digital computer Charles Babbage. The first ever Computers Day was observed in 2024, that is this year. So first edition or the inaugural edition was observed this year only. Also remember Charles Babbage, he is often known as the father of the computer. He was born in 1791 in London, UK. Next is Government of Andhra Pradesh has declared Ratha Saptami as state festival. I repeat, Government of Andhra Pradesh, they have declared Ratha Saptami, also known as the Sun God Festival, as their state festival for 3 days. Take a note of this. This Ratha Saptami 2025 will be observed from 4 to 6th of Feb 2025. Next is Mizoram. They have signed a memorandum of agreement with partner banks for Banna Kai scheme. I repeat, Mizoram, they have signed a memorandum of agreement with the partner banks, that is your SBI, Mizoram Rural Bank, Mizoram Cooperative Apex Bank, for the disbursement of loans under the hand-holding scheme, that is Banna Kaya scheme. This signing of this scheme was chaired by the Secretary of Planning and Program Implementation of Mizoram, Pu Lalmashwama Pachau. Take a note of this. Apart from this, if we talk about this Banna Kaya scheme, it is a key initiative by the Ministry of Mizoram government that is designed to promote self-reliance and economic growth. Next is India's first sports management mobile application has been launched in Andhra Pradesh. That is Creda app. That is a first of its kind mobile application to improve sports management across the state. This app was officially launched by Mandipalli Ram Prasad Reddy, the Union Minister for Youth and Sports of Andhra Pradesh. And this Creda app is designed to be one-stop solution for sports-related matters. It allows them to update their profiles, track their performances, and access the achievement certificates through DigiLocker. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next is which company has recently launched a series of the advanced remote controlled weapon and surveillance system Parashu, Fenish, Sharur and Durgam to enhance the defense capabilities of India. I repeat, remote controlled weapon and surveillance system Parashu, Fanish, Sharur and Durgam. Right, they have been launched by Zen Technologies Limited. This Zen Technologies Limited, this is Hyderabad, Telangana based company, and it has launched a series of advanced remote controlled weapon and surveillance system that will enhance the capabilities of Indian Army. Also, these innovations were developed in collaboration with AI Turing Technologies Private Limited. Next, which ministry has recently partnered with the Military College of Telecommunication Engineering to foster innovation for defense application? So, which is that ministry? It is Ministry of Electronics, Information and Technology. Right, with them they will be collaborating with they will be collaborating with MCTE, that is your Military College of Telecommunication and Engineering, and here you will be focusing on innovation, drive technological advancement for the defense product, and you will be seeing various research and development and new use cases, new technologies, new weapon systems for our defense. Next, in which state DRDO has recently conducted 3 flight tests for the advanced 4th generation of very short range air defense system. So the test for these very short range air defense system, right, that is the 4th generation of very short range air defense system, was conducted in the state of Rajasthan. It was conducted by whom? It was conducted by DRDO.
Next is which IIT has recently partnered with DRDO to develop a lightweight bulletproof jacket, that is ABHED, that is Advanced Ballistics for High Energy Defeat. So which IIT? It is IIT Delhi, right? And this jacket, that's lightweight bulletproof jacket, correct, it was developed at the DRDO Industry Academy Center of Excellence at IIT Delhi, and this will provide a 360-degree protection with front as well as rear armor. Next, in which state new artillery firing range was opened by the Indian Army? It was opened in Arunachal Pradesh, right? This was in this region, that is the Tawang sector, right, of Arunachal Pradesh. It lies, or it falls under the Eastern Command of the Indian Army, and where the first ever edition of the artillery firing range was established in the high altitude area. Next, which organization has recently delivered the first AL-31FP? AL-31FP. This is an aero engine. It has been delivered to the Indian Air Force at Koraput, Odisha. So which organization delivered it? It was delivered by Hindustan Aeronautics Limited, right? And here the Ministry of Defense, they have signed a 26,000 crore rupees contract with Hindustan Aeronautics Limited to deliver the such 240 AL-31FP aero engines, which will be used in Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. Next, which organization has delivered the INS Nirdeshak Yard 3026, that is the second of the 4 survey vessel large ships to the Indian Navy? It is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. It was delivered at Kolkata, West Bengal based company GRSE, delivered by Kolkata, West Bengal based GRSE. It was delivered to the Indian Navy. It has more than 80% of the indigenous content, and it will help us to enhance the capabilities of the Indian Navy. Next, which country has recently approved the sale of 53 Mark 54 lightweight torpedoes all roundups to the India? So it is United States of America. They have recently approved the sale of such 53 torpedoes. These are your MK54 lightweight torpedoes, right? And it has been delivered to India. These torpedoes are valued at $175 million. Right, these torpedoes will be utilized in MH-60R Seahawk helicopters. Next is which of the following countries did not participate in the 28th edition of the multinational maritime exercise Malabar held in October 2024? So it is Sri Lanka, right? It is the 28th edition of exercise, and here Sri Lanka did not take part in the Malabar because in Malabar USA, Japan, Australia and India participate. Similar kind is AUKUS. AUKUS is Australia, UK and USA. Next, name the multinational maritime exercise in which INS Talwar has recently participated at the Simonstown in South Africa. So what is the name of that exercise? It is IB Summer 8, right? That was the 8th edition of that exercise, correct? IB Summer means India, Brazil, South Africa maritime exercise, right? And it was a trilateral maritime exercise held from 6th to 8th of October. And what is the location? It was Simonstown in South Africa. So remember, Simonstown is important. Next, in October, Indian Army unveiled the first upgraded T-90 Bhishma tank, which is manufactured under a license agreement with which country? It is with Russia, right? T-90 Bhishma tank, right? And it has been developed under a license with which country? With Russia. And Indian Army has ordered 1657 such T-90 tanks and are currently operating 1300 units, and 1657 more will be included in the force. Next, which company has built the missile cum ammunition barge LSAM-12 Yard 80 launched by the Indian Navy in October 2024? So which is it? It is MS Seacon Engineering Project Private Limited, right? They have recently built the missile cum ammunition barge LSAM-12, that is Yard 80. It has been launched by the Indian Navy in October 2024, and it is the 6th vessel of the 8 missile cum ammunition barge projects. Next, which company has recently launched the multi-purpose vessel Yard number 18001 named INS Samarthak in Chennai, Tamil Nadu? It is L&T, Larsen and Toubro, right? Take a note of this. And Ministry of Defense and Chennai, Tamil Nadu based L&T Shipping Limited, they signed this contract for 2 MPVs, that is your multi-purpose vessels,
correct, in 2022. Next, name the multi-target detonation device that was launched by the Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi during Army Commanders Conference in Gangtok, Sikkim. So what is the name of that multi-target detonation device? It was Agniastra, right? And this is a multi-target portable detonation device. This was developed by Major Raj Prasad RS from the Indian Army's Corps of Engineers. This Agniastra was developed to address the critical operational needs in the military engagement. This system is equipped with microprocessor based electronic controls that will enhance the precision as well as the operational capabilities of Indian Army. Next is name that bilateral naval exercise conducted by Indian Navy and Royal Navy of Oman off the coast of Goa from 13th to 18th of October 2024. So name of the exercise is Nasim Al Bahar. Correct. And it was held from 13th to 18th of October. Correct. And it was held in Goa. This Nasim Al Bahar, also known as Sea Breeze exercise, right? This is the other name of this Al Nasim Al Bahar exercise. It was held in two phases, harbor phase and the sea phase. Next, where was the Indian Navy recently launched the fourth nuclear powered blasting missile submarine under the code name S4 Star? So at Visakhapatnam, Andhra Pradesh, right? Indian Navy has launched this fourth nuclear powered blasting missile submarine by the code name S4 Star. Correct, take a note of this. And as this S4 Star follows the commissioning of the INS Arihat, that is the second missile in this region, in this ship's submersible blasting nuclear submarine. Correct. While this is the second, which is the third? Third is INS Aridham. Correct. Next is Indian Coast Guard has recently launched two fast patrol vessels, Adamya and Akshar. That are built by Goa Shipyard Limited. This vessel has over 60% of indigenous content, and the vessel aims to enhance the security around the offshore areas and inland territories to bolster surveillance capabilities. Next, students, it's our homework. First, tell me recently, if I ask you, World Bank, they have approved how much amount for agriculture in Uttar Pradesh, to boost agriculture in Uttar Pradesh. Then second, tell me who has been appointed as the executive director of Yes Bank. Third, who recently won Nobel Prize in Physics, Chemistry, right, for 2024? Do tell me. These are your homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 29 एंड 30 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा. आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में. देन हम बात करेंगे 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड किस स्टेट ने अचीव करी, कौन सी वो 5वीं स्टेट बनी. देन पहली बॉर्डर सोलर विलेज की जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश की गई है. देन इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, किस रिवर पे बनाया जा रहा है. इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा. काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं. वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज भी आपकी रेगुलरली अपलोड की जाती है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड. माय नेम इज विकास राणा. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams.
These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर पर। पीएम मोदी ने विजिट किया एंड इनॉग्रेट किया वेरियस प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश में। देखो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की एंड इनको ऑनर करने के लिए ही यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। जैसे बात करें, पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, खजुराहो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। 44,605 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया। देन सेकंड आ जाता है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तीसरी चीज़ याद रखेंगे, 1153 अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। एंड चौथा 100 रुपीज़ का एक कमेमोरेटिव कॉइन एंड अ स्टैम्प को यहाँ पे लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। कैपिटल भोपाल। यहाँ पर आपको कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर वो कौन सी 5वीं स्टेट बनी है इंडिया में जिन्होंने 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाने का काम किया रूरल हाउस होल्ड तक? तो सीधा नलके से आपके घर में पानी पहुंच जाएगा। ये है पंजाब स्टेट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। भगवंत सिंह मान यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एंड ये 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाने का काम किया गया अंडर जल जीवन मिशन ऑफ हर घर जल, राइट, जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम के अंडर इसको यहाँ पे काम करने पहुंचाने का काम करा। यहीं पे आप देखेंगे टू टैकल वाटर क्वालिटी एंड स्कैरसिटी इश्यूज 15 मेजर कैनाल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट। ऑल विलेजेस इन द स्टेट हैव अचीव्ड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज भी सेटअप की जा रही हैं विलेजेस में। अगर मैं हर घर जल स्कीम की बात करूं, ये 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, गुजरात की वो कौन सी विलेज है जो कि पहली बॉर्डर सोलर विलेज बनी इंडिया की? वो है मसाली विलेज, राइट। मसाली विलेज आपकी पहली बॉर्डर सोलर विलेज बनी है इंडिया की, राइट। यहाँ पे मसाली इज वन ऑफ द 70 विलेजेस जो यहाँ पर आपकी डेवलप की जा रही हैं अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यहाँ पे सोलर विलेज बन गई है वे मसाली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। आई रिपीट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, राइट। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना, राइट। यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी सेटअप की गई है। ये आपका 4R पे काम करता है ये एयरपोर्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्टोर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। हम बात करेंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम की, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट। जो कि कौन बना रहा है? चाइना के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, टेक अ नोट ऑफ दिस। अभी काफ़ी सोशल मीडिया में भी इस पे ऊपर बवाल हुआ था। तो चाइना ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम का, जो कि यारलुंग जेंगबो रिवर पे होगा, जो कि 5th लार्जेस्ट रिवर है चाइना तिब्बत में, राइट। यहाँ पे आपका देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर से पानी इनफ्लो होता है इंडिया में एंड बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं इंडिया का बोला जा रहा था न्यूज़ में कि बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ये बन रहा है तो इंडिया के वाटर सप्लाई पे दिक्कत आएगी, बट चाइना के द्वारा भी बोला गया कि यहाँ पे इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करें क्लेम रेशियो ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसमें गिरावट देखने को मिली टू 82.52% फॉर FY24, जो कि 82.95% थी FY23 में। ऑल्सो यहाँ पे बताया कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, दे अंडर रोट अ टोटल डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ 2.9 लाख करोड़ रुपीज इन इंडिया इन FY24। इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको भी देखें तो 3.7% हुआ इन FY24, जो कि 4% था FY23 में। अगर IRDAI की बात करें, इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, ये एक एनुअल रिपोर्ट थी। IRDAI के अगर मैं बात करूँ, चेयरपर्सन कौन रहेंगे? देवाशीष पांडा जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। एंड इसको सन 2000 में इस्टेब्लिश किया गया, 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड इसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया था अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने भी एक 8 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑन एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन
फाइनेंशियल सेक्टर। तो तरीके से बिना कोई चालबाजी करते हुए, कोई मेल प्रैक्टिस यूज़ ना करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में एआई के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई ताकि एथिकल उसका यूज़ किया जा सके इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो आरबीआई ने ये 8 मेंबर की कमेटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। ये बनाएंगे फ्री एआई फ्रेमवर्क को। ये क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कमेटी को चेयर किसके द्वारा किया जाएगा? पुष्पक भट्टाचार्य जी के द्वारा चेयर किया जाएगा, जो कि प्रोफेसर हैं फ्रॉम द आईआईटी बॉम्बे। इस कमेटी को 6 महीने के विद इन यहाँ पे रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आईएफएससीए। आईएफएससीए ने रिवाइज किया फ्रेमवर्क फॉर आईटीएफएस प्लेटफॉर्म इन जिफ्ट सिटी। जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। आईएफएससीए क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आईटीएफएस क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज। तो जिफ्ट सिटी में यहाँ पे अभी देखेंगे आईएफएससीए इन्होंने नया फ्रेमवर्क रिलीज किया है ताकि जो ऑपरेशन है आईटीएफएस प्लेटफॉर्म के गांधीनगर गुजरात में उसमें बढ़ावा देखने को मिले। इससे क्या होगा? आईटीएफएस ये अलाउ करेगा टू ऑपरेट इन आईएफएससी, राइट, जो कि हमें हेल्प करेगा कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं एंड इम्पोर्टर्स हैं बोथ इंडिया एंड ग्लोबली, उनकी जो फाइनेंसिंग गैप है उसको पूरा किया जा सके। यहीं पे हम देखेंगे ऑन टैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप क्या एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। अगर मैं आईएफएससीए की बात करूँ तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? के राजारामन। हेडक्वार्टर जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। सन 2020 में इसको स्टैब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इन्होंने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5.85 लाख रुपीज ऑन इंडियन बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस, राइट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इनके द्वारा 5.85 लाख करोड़ रुपीज की यहाँ पे पेनल्टी इंपोर्ट की गई, पेनल्टी 5.85 लाख रुपीज़ की यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई है इंडियन बैंक पर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर आईसीआईसीआई बैंक एंड टाइम्स इंटरनेट। टाइम्स इंटरनेट ये बेसिकली आपकी एक सब्सिडरी है किसकी? आईसीआईसीआई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, ये इनका डिजिटल आर्म है। तो आईसीआईसीआई बैंक एंड टाइम्स इंटरनेट इनके द्वारा लॉन्च किया गया टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को। ये एक सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल कार्ड रहेगा। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया गया है। ट्रैवल बेनिफिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, क्यूरेटेड प्रिविलेजेस यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई फॉर एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। इसको पावर किसके द्वारा किया जाएगा? इट इज पावर्ड बाय वीजा। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक एंड एफसीएओआई, जो कि है फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के द्वारा भी एक एमओयू साइन हुआ ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके, कोल्ड चेन स्टोरेज को बेटर किया जा सके। बेसिकली ये कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? फार्मर यहाँ पर अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेजिटेबल वो 6 से 8 महीने तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इनको, ताकि वो डिग्रेड ना हो एंड जब उनको लगे कि प्राइस ठीक है वो वहाँ पर उस फसल को बेच सकते हैं, राइट। यही कोल्ड स्टोरेजेस आप देखेंगे डिमांड सप्लाई को मेंटेन करने में और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने में काम आता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो मान लो एक बार कोई एक सीज़न में फसल नहीं हुई तो उस सीज़न तो बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल जाएगी, राइट। तो इन सबको चीज़ चेक में रखने के लिए एंड एट द टाइम ऑफ नेसेसरी इमरजेंसी के टाइम पे ये रिलीज़ की जा सके, ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक मेंबर है। इनके द्वारा 630 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई इन एनडीआर इन्विट एसएलबीज। एसएलबी क्या है? सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। तो ये जो इन्विट्स हैं ये होते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इन्विट होते हैं, जैसे रीट होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिमिलरली यहाँ पे एनडीआर इन्विट में जो कि एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है, इसमें आईएफसी के द्वारा 630 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई। 630 करोड़ मतलब मोटा मोटा $75 मिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर टीपीआरईएल, जो कि है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने कैनरा बैंक के साथ पार्टनर किया फॉर रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस, राइट। एंड ये किसके अंडर? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर किया गया, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर 3 किलोवाट कैपेसिटी रहेगी तो 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 10 साल तक लोन मिल जाएगा, 7% एनुअल इंटरेस्ट रहेगा। वहीं पे 3 किलोवाट से 10 किलोवाट अगर आप लोन लेते हैं 6 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं एंड 10% यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा और 10 ईयर का ही रीपेमेंट पीरियड रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जॉब क्रिएशन स्लोज इन द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इन FY24। ये डाटा रिलीज किया गया एनएसआर के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, राइट। जो फ्रेश न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है उसमें इन द अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें गिरावट देखने को मिली है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस पर। किस्ट इन्होंने पार्टनर किया सचिन तेंदुलकर को ताकि
जो डिजिटल फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बढ़ावा दिया जा सके। देखो किस्ट क्या है, ये इंडिया का लीडिंग डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ऑन EMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। एंड इन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे एक इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया है। मूविंग ऑन, सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया खो खो वर्ल्ड कप का। खो खो वर्ल्ड कप का जो इनॉग्रल एडिशन है, मतलब जो फर्स्ट एडिशन है इस खो खो वर्ल्ड कप का, वो कहाँ पर होगा, वो हमारे इंडिया में ही होगा। 13 से लेके 19 फरवरी तक होगा, न्यू दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एंड न्यू दिल्ली एंड नोएडा इंडोर स्टेडियम में ये हमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। SIA इंडिया, SIA क्या है, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया घाना के GSSTI के साथ ताकि स्पेस सेक्टर में बूस्ट मिल सके। इवन आप देखेंगे इंडिया में सरकार के द्वारा जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पे 100% FDI अलाउ किया है। एंड हम देखते हैं जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पे बहुत ग्रोथ चल रही है पूरी दुनिया में, तो इंडिया पीछे क्यों रह सके, इसीलिए इंडिया और घाना के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग पर, इनोवेशन के ऊपर, राइट, कि कैसे हम एक साथ में को डेवलपमेंट कर सके, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है अमंत्या टेक्नोलॉजीज, इनको अवार्ड किया गया फंडिंग अंडर द अमंत्या टेक्नोलॉजीज अवार्डेड फंडिंग, मतलब इनको फंडिंग मिली अंडर TTDF स्कीम फॉर इंडिया 5G स्टैक। TTDF क्या है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये इनको मिला है अमंत्या टेक्नोलॉजीज को, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। एंड यहाँ पर इनको मिला है ताकि जो ये 5G के यूज केसेस है उनको यहाँ पे हम डेवलप कर सके, 5G के ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया होस्ट करेगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का। खो खो वर्ल्ड कप भी इंडिया होस्ट करेगा एंड ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप भी कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा 2025 में। ये 11वां एडिशन रहेगा जहाँ पे राइफल, पिस्टल एंड शॉर्ट गुल से रिलेटेड हमें इवेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं रिनोन मलयालम राइटर एंड पद्मा भूषण अवार्डी MT वासुदेवन नायर, इनका रिसेंटली निधन हो गया है 91 की एज में। कोझिकोडी केरला में निधन हुआ, केरला में ही इनका जन्म हुआ था 1933 में। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया है 2005 में, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर इसके बाद बुक्स की बात करेंगे तो अभी हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने रिलीज की दीपा मलिक की एक बुक जो कि है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हार्पर कॉलिन्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। दीपा मलिक ये इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व करता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी की बात करें तो ये 100th बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कौन सा गुड गवर्नेंस डे ये ऑब्जर्व किया गया, तो 11th गुड गवर्नेंस डे हमने ऑब्जर्व किया। यहीं पे आप इसकी थीम याद रख सकते हैं, इंडियाज पाथ टू अ विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट वीर बाल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, 26 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। गुरु नानक जी के यहाँ पे 4 बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, करेक्ट। उनको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह 4 सन, करेक्ट, यहाँ पे निधन हो गया था उनका, उनकी डेथ हो गई थी, उनको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, 27 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो एपिडेमिक्स हमें देखने को मिली, राइट, उससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्या हम हेल्थ केयर क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार सन 2020 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 26 दिसंबर को एज द कंप्यूटर ऑपरेटर्स डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स बेबर, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने डिक्लेयर किया रथा सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल। ये 3 दिन लंबा आपका फेस्टिवल चलेगा। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ सन गॉड। एंड राथा सप्तमी 2025 में 4 से 6 फरवरी तक इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर मिजोरम, इन्होंने भी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद पार्टनर बैंक्स। पार्टनर बैंक्स कौन से हैं, SBI, मिजोरम रूरल बैंक एंड मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। इनके द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप करी गई ताकि बना काया स्कीम को लॉन्च किया जा सके। ये है हैंड होल्डिंग स्कीम, करेक्ट। और ये बना काया स्कीम है क्या, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये स्कीम आपको अलाउ करती है, करेक्ट, कि हम जो
सेल्फ रिलायंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको ग्रो कर सकें। इस स्कीम का प्रोग्रेस पार्टनर्स इनिशिएटिव के अंडर लाया गया कि 100% हम सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक्स को, या फिर बैंक्स फार्मर्स को लोन दे सकते हैं, बेटर सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हैं अगर वो 100% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर टाइमली पेमेंट्स अगर पे करते हैं, ठीक है। या फिर मतलब पहले फाइनेंस के लिए फार्मर्स को नॉन फार्मर सेक्टर्स में फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि यहाँ पे और बेटर हम देख सके कॉपरेशन। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में, जो कि है क्रेडा एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे अलाउ करते हैं यूजर्स को टू अपडेट देयर प्रोफाइल्स, ट्रैक देयर परफॉर्मेंस, अचीव अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स थ्रू डिजिलॉकर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। CISF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? राजवेंद्र सिंह भट्टी, ठीक है। राजवेंद्र सिंह भट्टी ये किनको सक्सीड करेंगे? अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट किनको अभी अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो वो है धर्मेंद्र, राइट। धर्मेंद्र को अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे नरेश कुमार को। नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयर फोर्स? तो वो रहेंगे तेजिंदर सिंह, राइट। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो DK सुनील को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये सक्सीड करेंगे CB अनंत कृष्णन को। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? अमृत लाल मीना, ये सक्सीड किनको करेंगे? ब्रिजेश मेहरोत्रा को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का? तो Y हरा गोपाल, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली, या कौन थे वो पहले इंडियन टू बी ऑफिशियली नेम्ड एज द फाउंडेशन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन के? तो वो है शरद कमल अचंता, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? माइकल बार्नियर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चार्ज लेंगे फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय FSIB? तो रामा मोहन राव अमारा, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ MD ऑफ SBI बाय FSIB। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ SEBI? बोर्ड मेंबर ऑफ SEBI कौन बने हैं अभी रिसेंटली? वो हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन सितंबर? कौन बने थे? वो है राजा रणधीर सिंह, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था एशियन गेम्स में 1978 में। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे? वो रहेंगे सुब्रता मोंडल, ठीक है। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? HO सूरी को ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो तुहिन कांता पांडे, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ये सक्सीड करेंगे TV सोमनाथन। नेक्स्ट किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी? तो किनको अपॉइंट किया गया है? तो है वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी को, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। नेक्स्ट किनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया इस कमेटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है मनीष कुमार गुप्ता, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे CS
धर्मेंद्र को, एंड CS धर्मेंद्र अगर आपको याद हो तो ये अपॉइंट किए गए थे क्या, एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किन हु इज सेड टू बी रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर सेकेंड टर्म रहेगा इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH के, कौन है वो है मोहम्मद तैयब इकरम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट वन ऑफ द 6 सीनियर एडवोकेट्स जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था बाय ACC के द्वारा टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इनमें से कौन से नहीं है, वो तुषार मेहता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस, तो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के कौन अभी MD एंड CEO अपॉइंट यहाँ पर किए गए हैं, तो वो हैं गोपालन श्रीनिवासन। नेक्स्ट, उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको ऑन बोर्ड किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, सो राहुल शरद द्राविड़, इनको यहाँ पे ऑन बोर्ड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो रहेंगे जाफर हसान नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जॉर्डन के। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो ये रहेंगी मनु बाकर, राइट, ये एक शूटर है और पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीते। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द 68th प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो वो कौन रहेंगे, सांग वोक हम यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अनुराग गर्ग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला है, अभी रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगे, लोकेशन का नाम बताओ, कौन से एडिशन के होंगे ये भी बताओ। सेकंड, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री होस्ट करेगी या उन्होंने डिक्लेयर किया होस्ट करने की 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, काफ़ी सारे स्टेडियम्स भी इस कंट्री के द्वारा दिखाए गए थे। देन F1 आबू धाबी ग्रैंड पिक्स किसके द्वारा जीती गई। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक्स चाहिए आज की वीडियो पे, राइट। एंड जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी से मैं चाहता हूँ कि वो नीचे होमवर्क क्वेश्चंस को ज़रूर अटेंड करा करो डेली बेसिस पे, इससे आपकी रिविजन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।